और दूसरा सर कि ये तो एंड पॉइंट कैसे जनरेट करते हैं जब कोई सेंडर, जैसे हमने अभी सेंडर के थ्रू लगाया तो उसका इंस्टेंस में पासवर्ड और ये क्लाइंट एंड सीक्रेट ये सब कैसे करते हैं अभी ये सब? दिखाएंगे उसको। जस्ट ये एंड पॉइंट जनरेट करने वाला ऑप्शन ना आपका, देखिए। Now currently we are standing up on this point. We are reading out about content modifier. यस We are focusing on this and even learning different scenarios about properties, headers, and या other things in content modifier. Then we are having some basic conversions. Then we can use Groovy or other hash mappings code also to convert, but that will be coming in advanced learning. Then we have filters and drive. We have then local calls, external calls, and then we come up to adapters. Here we have HTTP, HTTPS, creating the endpoints using those things. I will teach you those are things over here. Okay, so we'll try to cover up all these things by today, most probably. So with the content modifier, content modifier is part of transformations. Okay, so we have one integration content which were deployed last week. Right now you can't see the results for that. To see the results, then we have to deploy the interface again, and we are deploying this using trace mode so that you can go and trace the complete logs, trace the steps, what is moving up or what has been deployed in that. Okay, I'm deploying it again just to see the result. I have deployed it and it will be coming as successfully deployed, completed. After looking at that, then we can go to logs, and it will be done for all the interfaces what all you are going to develop. You are going to do practices. You will see the results over here. So results are very helpful. Like sometimes we need the payload to be extracted. Even I think Karan has gone through that phase. He is extracting the payload from SuccessFactors. So that payload we need to check it out. So in content modifier, we have given some hello world key or some written hello world to be written over there. So it will be coming up in the results at the end phase. We can see in message content our what we are writing it over there. We have given it at a constant, and in constant we have passed these all things HTML, CSS, JavaScript, and Java. I just written it formally over here. You can see we just written it in constant and formally all the things over here, and so it is showing me over here. So this is called a payload or response payload. You will not see this payload in content modifier. Let me go to content modifier instead. Content modifier will kill a payload or results and response which are coming from the previous step, means from start. And from start, we are not giving it's the Kickstarter and even which has started the integration. Any like you have HTTP or I'm using SAP, Faraj, your I will voice is be cracking. getting some response or some request is coming from some third party over here on it. Definitely content modifier will contain that body, but the body which we have, I'm sorry, let me check my Wi-Fi or edit out because I'm sitting at the door, entrance door. I just need to change this to another one. We are back. It's good now. Hello. Yeah, it's Yeah, good now. better now. Yeah, better. So at content modifier, we will not get any details. As I said, the request which is coming from the previous step can be shown on the current step. So the current step is not containing anything, and the request which we have made on content modifier, the modifications, the add access of headers and properties will be visible on the next step. That is the endpoint. Here you can see the results. So we have not
marked any exchange properties and headers up till now, but you will see few exchange properties which are coming over here. I think हम लोगों ने एक property और headers लिखे हुए already. F name Karan and name Amit. Okay. So exchange property is there, F name Karan, and you can see few other properties are there which are standard properties coming from SAP side only, like runtime ID or log levels and other message processing logs. Okay, and header also containing one name Amit, and header contains the message process log ID. So now these property and headers are there, name Amit and property is F name Karan. I just want to use those properties and headers in my next step. Like at my next step, I can be using a request reply. I can be using other things. So if I'm using a request reply or other things, then how can I recall it up there? So to recall it, okay, let me edit this first. I just want to use it in multiple ways. I'm jumping it from one topic to other, but I should not do. Okay. Just I can show it in the content modifier only because routers and other multicasting things will come on later. I just need to give some brief explanation for that also. I'm using one content modifier and I'm using this as a proxy for request reply or something. I'm using it maybe request reply or like I think request reply definition is not given. Request replies are used to get the details from third party or from external sources, and it can contain the adapters again. Adapters like HTTP, SFTP, or we have OData or SuccessFactor. Just a second there now. So what is the difference between header and property? Yeah, I will show you that. Here, if I'm giving using anything over there, I'm recalling the data. So I can use headers and properties over there. So how we can use it to call an header property? We have to call it using the header. Uh, like if I'm calling out header, so it will be dollar header, and if I'm calling out the property, then it will be dollar property. Like we give the keywords with headers and properties like that. And if I'm calling out the message content body, then it will be $in dot body. So to call it out, I'm defining one thing over here. My it will be now expression using constant value. Constant, it will give the constant values only. So my friend so first I'm recalling the header one only Amit, and I'm writing the headers and properties over there. So to call the header, we have to give it in the form of calling an header. This is the Dollar. camel Apache string, no? Like that. It is using Yeah, this. it can be a camel apache string or whatever the name you are giving it over there. It can be in that form. So for header, we have given header definition. What with the header definition we have given name only, I guess. So I will call out this name. Yeah. Right. So this name will be called up then over here. Header dot f my name, and second friend name is coming from property. So it will be Dollar dot property dot name. property dot property name. So what was the property name? F name, something like that, right? Yeah, F name. And if I want to call the body also, then how we can call the body? I'm just calling the body over here, the below. It will That is be in dot something, no? dollar in dot body. In dot. Amit or Karan? No, me, Amit. So you know the things. So if I have called it out, then my response will be coming out on based on the headers and properties created. Yeah. So you have one question: what is the difference between header and properties? As long as we are using the same thing inside this one workflow,
or this in work in with one iFlow, there is no change. Mostly things are same and common only. But if I'm jumping out of this iFlow, like I'm sending my request from this iFlow to another iFlow, like from here we can use process direct. I will show you how we can use process direct. Process directs are used to send request from one iFlow to other iFlow. So I'm sending request from here to some other iFlow. In that case, properties will not pass from here to there. Only headers will cross up from here to there. So headers are those variables which can flow from one iFlow to other external iFlow. But properties are those variables which can flow within the iFlow. Got it? Yeah. It means if you want to send something from this iFlow to another iFlow, then we use header, and the Yeah. property will within the header or within the this iFlow only. Yes. And we can So transfer if we, properties no, from one main one iFlow to question. other local integration processes. We can transfer properties from here to that. But outside of this iFlow, it will not go. Yes, Mhm. Amit. My question is, if but when we pass any information regarding our company or regarding this from the header content modify header, Mhm. it will see to another iFlow, and it will reveal out, I think. So how to that hide this content header uh, uh, message So you are अगर हम saying नहीं दिखाना चाहते हैं. it can be revealed in at the security levels. You're saying that, right? Yeah, yeah. So it is not going outside of CPI. You know, this integration suite is an environment which is secured in that manner, and it is not going out from this integration suite. It is flowing within the integration suite only. Like we have different packages. Let me. नहीं, जैसे मान लो हमारा सेंडर है, मैं किसी को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, किसी और सर्वर को हिट कर रहा हूँ सीपीआई के थ्रू, Mhm. उसके सर्वर को, तो हमारा हेडर का जो इन्फॉर्मेशन है वो तो वो पढ़ सकते हैं ना, उनको तो मिलेगा ही Mm, ना ये. Mostly it will be based on some like what we call it out. If I'm getting a subscription from some other application, so they will give me some exposed, like they will be giving me APIs or some exposed things will be available for me there. Similarly, SAP is also providing that. If any application we are sending, like let's suppose we are sending data to PayPal or RuPay. So if you are sending data to PayPal or RuPay, then PayPal and RuPay have some agreement with SAP and with all those third party applications that they will allow you to see those things only which will not create any security threats, right? If we are passing out headers and properties, if those headers and properties are creating security threats, then that will be encrypted. That will be encrypted, like what all encryption methods we have in CPI. Also over here we have multiple encryption methods like in base 64 or PGP or other, but the encryption is only done at that level where we have some security threats, or we are passing those headers and properties which can be like used for any other purposes inside or at the network level. So at network level we have more security in terms of passing out headers, because headers are not easily exposed at that level. Sorry, we are passing out hidden headers also. I mean, we are passing out some encrypted headers also. But that's not the main concern. Like, I think you are thinking about more in other advanced levels. So to pass on the headers over here, we are passing out headers from one integration iFlow within the integration suite to other integration iFlow. How it is, we have multiple packages. You have seen there are two packages right now. So Yeah. it can be multiple packages, like up to range of 50 or 100. So if I'm passing one request from first package to 50th package or 49th package, and I have some requirements similar to those, like I'm passing, I have created one generic receiver in the 49th package, and I'm sending request from first to 49th package. So it will be flown using headers only, and it is within the integration suite. We are not passing out outside of the integration suite, right? So it is not going on network level at that time. When the request is going to external systems or external devices or third party applications, at that time the headers are going in network level and have many constraints in terms of security, right?
Oh, so we are deploying this now. We have added few things, and just to see the result, we can deploy it up again. And just before deploying, I'm putting this in trace mode. What is the debug mode it is? Yeah, debug mode is also like it's available for 24 hours. And for the monitoring part, I will show you like we have one more session coming up for monitoring parts. But to give you brief about it right now, like to don't be confused at that level. Trace mode is available for 10 minutes and gives you more information, Okay. including the payload, including the response results and all. Debug is that which gives you results based on your like run results or run responses. Like if we have Result, results on the basis of runtime, I think. basis of runtime, and it is available for 24 hours instead of trace is available for 10 minutes, and the 10 data minutes. trace data is available for 1 hour. Debug is available for 24 hours, and debug data is available for forever, like up till 1 month, not forever. All those data is available for 1 month only. Error is that if any error is coming in the interface or in the integration artifact, then it will give you the results for the error or on that. Info is the general one. Info is the default one. Info means if request is running, it will be running in the info level only. It can show you properties and headers, but not all the details available over there, right? So I'm opening up the artifact which we have in right now. You can see in trace mode we have integration flow, log content and message content. In message content we have three more options again. In message content, we have header, properties, and payload. In debug, you will not get the payload. You will get the header and properties only. You will get the log content with properties and activities only. So here, the request is coming from the last payload, last content modifier. Then these results which we have applied over here, it will be available on the end. And you can see my friends are Amit and Karan, which we have not passed as Amit and Karan. We have taken it from header and we have taken this from property. And this is the content body we have passed in dot body, right? Any doubt on these properties and headers, bro or No, guys? no. And we have two more fellows which are joining this patch. I think it they should not face any trouble later on, because it is going to be very late for them to join at that moment. uh, what I can say they need to work very hard if they're joining after some time. And even content modifier, if you have any doubts or questions for content modifiers, you can ask it right now. For what all things Yeah. content modifier can be used, it can be used to set headers and properties, to set the body. In body we have two different type of Constant and mechanisms, expressions. constant and expressions. And in expressions we can pass, I as already have mentioned it out, HTML, CSS, JavaScript, Java or Groovy, we can pass all those things. And even we can pass the constant values like we have passed for hello world. In the second case I have shown you how headers, properties, and some like the things which we have written over there are in Groovy. So that can be called as in Groovy. We have written a simple code, or maybe just calling out the headers and properties stored using Groovy variables, right? And even this is also a format of Groovy defined using calling out the body, complete body, right? If we want to write any logic something over here, that can also be written, but that will not be applied. We can only just use Groovy up to that extent, where um, we are formatting formatting the content. We can use Groovy up to that level. The logic will not be applied over here, Okay. right? Hmm. तो ग्रूवी हम लोग हेडर में भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं. It is only valid with up to creating variables. Like if I'm creating one variable over here, I'm creating one variable for current date, right? So I Okay. can pass constant also. I can pass other
local property or local variable or global variables also if we have that stored. But if I want to pass expression, then here I just need to write a variable creation code. How we create the variable in Groovy or in Java, we use a function, a date.now function, right? So I just need to use that function. How it is calling of the variable expression date.now, and the format will be defined in this YYMMDD, or it can be defined up to time, hours, minutes, seconds, everything. So I have defined a function over here calling of the date.now variable. Okay. Let me see. I hope it is fine, but if it not, I just need to change this format over here. And what is data type and default value? Yeah, data type will be Java string like if we are giving constant values and other variables, and default value we can set out the default value over there. It can be Java lang string if What I'm is string? Yeah. setting up it as the string value, and default value is not present for this expression. But if I'm giving any local variable or current variable, like I have set one where local variable or global variable, then it will contain a default value. I can give a default value of something. So first time it will call out this value, then second time it will use the source value. I'm using a source value like lmds, nothing, right? It is completed, but let me see if it has bring out the date, because we have not defined the data type over there at that moment. So you can see expression is coming as like this only because data type also not defined and date.now function is not working properly. So to see out this, think date.now function is moving up with these values like this. Just let me check it out once again. Is there is not any any functionality like that we just putting the cursor on that and right click and take the correct uh, syntax, Syntax, yeah, there is no correct functionality like that. syntax or correct function? There is nothing like that. We have to learn it, or like we have to keep this in mind. Actually, we also have something very commonly known these things, and every time reminding or remembering the extensions or syntax is very difficult. It is very slightly changes which can like create problems or can create errors. Even I have seen one more thing while writing the codes. Even a minor changes using like using some other things like if I'm using some keyword only, or I missed a comma or some semicolons something, so it can create problem in that case also. So what we are missing on that, we have missed a lot of things, right? Sapmate, yeah, Screen is not visible, sir. yeah, I'm sharing it out. Let me know if it is visible. It's visible. Yeah, it's Yeah. visible now. So we have to define every variable using dollar. We were missing dollar over there, right? Then they don't know. I have taken out a variable. Yeah. So it is going with date now. And then simple definition of the, yeah, now it's fine.
I hope we don't have trace mode anymore. Raj, I'm having one question. Yeah, When we creating the integration flow, so there is option to save or save as a version. yeah. So where we have to use save and where we have to use save as a version. We'll give that explanation also. You have like build up some integrations in PIPO. No, sir, I'm the fresher in the CPI. I don't know any PIPU concept. You are a paper, right? Yeah, I'm the web. I always missed it out. So Karan is a PIPO guy. So Yeah. while coding in ABAP also, na, we have this Mm, functionality. Like while we are creating a code, the basic code for any programming or something. So first of all, we create the base code with first version, right? And if any further changes are coming in that code, then we save the same code with another new version, right? because if you creating the sub different TR will be created with. Yeah. So similar functionality is working over here also. Mm, So see, you can see the current date is coming, right? mhm. But if you want that formatting that to that date first month after that year, then how to format this? Hmm. You want to change the format like Yeah, then we DD, have to change here only. DDMMYY, want that, right? Yeah, yeah. Change it like this, then it will bring up the date, first month and year, right? Mm, So you are asking if you are saving and saving as version, right? What is the difference yeah. between it? Just if I'm clicking on save, it will save with the same version. The version will not get updated. And if I'm Okay. clicking and clicking saving at version, right? Then my Mhm. version will change from the base version to +1, right? Okay. If I'm showing up you here, you can see +1 will definitely come up over there. You can see Yeah. 1.0.1. So Okay. the base version is 1.0.0, which we have created. You remember that I have given 1.0.0 Yeah. Yeah. when while Mhm. we have created the artifact. Now it Mm, is coming with +1. So why it is coming? So the base version is 1.0.0. While mhm, we are working on developments, we are working on any integration artifacts based mhm, on real time scenarios. First, we mhm. complete integration with one version. Once Okay. it is completed, it is moving into testing and in other things. Then while in testing, we get some new things or exceptions coming out, or some additional things which client is highlighting. You need to put up these things, you need to put up these things. Then we are coming again and making changes in the integration development. Then we have to save that with a new version, because our last version will be saved, will be completed successfully. Then our new version will be having some more changes, and what we can write down there in the comment over here, like additional changes mentioned by someone, mentioned by XYZ, and we are putting out these over here. So इसका benefit क्या रहता है? What is benefit for this? Even sometime if in future after 2 weeks or 3 weeks, client is saying that हमने तो ये बोला ही नहीं था, आपने क्यों Mm, change कर yes. Yes. दिया, Correct. right? Yeah. So what Yeah. we will do, we can show them you have told us this and we have saved this integration artifact with a new version because you said this. So वो कहता है like जाओ दोबारा से उसको वैसा ही कर दो जैसे पहले आपने बनाया था. Okay. So ठीक है. so how we can do that? लेट मी शो यू. मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है. मैंने ये नया Mhm, वर्जन से सेव किया और मेरा एक पुराना वर्जन ऑलरेडी सेव था, ठीक है. So mm, how we can do that? We will say them like we can do it, but mostly client हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो उनकी तो बात सुनो ही ना. mhm, तो mhm. अपने आप को हमेशा सेफर साइड पे रख के चलते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन इट्स अ वेरी गुड पार्ट ओवर हियर. सो हम लोग Yeah. जाते हैं और इस वर्जन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं. तो हम लोग हाँ. देखते हैं कि हमारे जितने भी प्रीवियस वर्जन, इवन मैंने देखे तो हम लोग 20-25 वर्जन तक हमारे सेव रहते हैं. तो अच्छा ठीक यू है. यू कैन गो एंड सी द लिस्ट ऑफ वर्जन्स ओवर हियर. आपका एक्टिव वर्जन ठीक है. अभी ये है, लेकिन आपका हाँ. प्रीवियस वर्जन एक था दूसरा, जिसमें आप ठीक आप है. बोल रहे थे कि सक्सेसफुल चल रहा था वो भी, हाँ. लेकिन हाँ. किसी ने चेंजेस ऐड करा दिए. तो आप जाके हाँ. उसको प्रीवियस वर्जन को रिवर्ट कर सकते हो while clicking on revert. तो द एक्टिव वर्जन विल बी दिस वन नाउ, और जो आपने चेंजेस किए वो दूसरे वर्जन में, प्रीवियस वर्जन में चले जाएंगे फिर. राइट, अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट?
ओके, जैसे मान लो सर, जैसे मैंने अभी रिवर्ट कर दिया 1.0 में, तो ये रिवर्ट फिर 1.01 में आ जाएगा? हाँ, ये लेटेस्ट नहीं, 1.0.1 में नहीं आएगा। हमारा हाँ, इफेक्टिव वर्जन ये हो जाएगा, और ये हमारा ओके। अनइफेक्टिव इनएक्टिव वर्जन बन जाएगा। मैं अब इसको अगर करके फिर इस दिखाता हूँ फिर आपको। 1 को, हाँ, एक बार इसको करके देख लेते हैं। तो ये जैसे बोल रहा है आपको कि इसको रिवर्ट करना, तो यहाँ पे कमेंट्स हाँ, मेंशन करेंगे व्हाई वी आर रिवर्टिंग दिस अप, वी हैव ओके, ठीक है, सो एंड सो थिंग्स, वी आर ठीक है, रिवर्टिंग ठीक दिस है। अप। So once I'm clicking on the revert, then my latest effective version will become 1.0.0, और जो मेरा करेक्ट। दूसरा वर्जन था वो पुराना हो जाएगा हमारा। आप देखोगे तो ये 1.0.1 पुराना हो गया अभी। इट और मीन्स जो मेरा रिवर्ट इज जो ऑल्सो मेरा ओवर हाँ, देयर। अब आप, जो मेरा पहला वर्जन था पुराना, वो भी वहाँ पे लिस्ट में मिलेगा आपको। लेकिन ओके, आपका ठीक है, एक्टिव वर्जन भी यही है अभी। अगर मुझे फिर से ओके, रिवर्ट सही, करना है तो मैं फिर से इसको रिवर्ट कर सकता हूँ। ठीक ओके, है। सो ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ सेविंग द इंटीग्रेशन आर्टिफैक्ट्स एज और वर्जन। एक क्वेश्चन और था मेरा। मान लीजिए मैं अभी जो करंट तो रिवर्ट हो गया, जब भी हम नया करेंगे नया वर्जन बन जाएगा। बट हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए हम 1.01 में ही अगर कुछ चेंजेस करते हैं और हमको इसी में सेव करना है, तो वो ऑप्शंस भी होगा? हम हाँ, नया वर्जन वो नहीं बनाना ऑप्शन भी है। चाहते? हम नया नहीं बनाना चाहते हैं, वो ऑप्शंस भी हैं। हाँ, आप आर्टिफैक्ट ओपन कर रहे हैं, हाँ, आपको आपने एडिट किया। अच्छा देखो, हाँ, हमारा ये इसमें कुछ भी नहीं है, वो बहुत पुराना हाँ, वर्जन आ गया। आपने ठीक है। इसको सेव किया। आप आपने काफी सारे चेंजेस किए, लेकिन आप सेव करना चाहते हो सेम 1.0.0 में, तो उसको यहाँ यस। आपको बस यहाँ पे जाके इसको चेंज करके सेव कर दीजिए। अच्छा, मतलब वर्जन चेंज कर देना पड़ेगा वहाँ पर। हम्म, मतलब अच्छा, उसको एक क्वेश्चन, आपको हाँ, अपडेट अपडेट नहीं होने देना है उसको। बाय ओके। डिफॉल्ट क्या होता है, ये अपडेट हो जाता है, +1 हो जाता है। नहीं, अगर आप यहाँ पे, मेरा +4 वर्जन था तो यहाँ पे हाँ, +5 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो मैं इसको हाँ, हाँ। +5 ना करके +4 ही करूंगा। मुझे वर्जन चेंज इस नहीं, साल जो इसमें भी, क्या होगा। हाँ, व्हाट विल बी देयर विल बी अ लॉस ऑफ सम इंफॉर्मेशन। आपने जो चेंज किया मीन्स, वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं मोस्टली जब आप वर्जन नहीं चेंज करना चाहते, जो कुछ इम्पैक्ट नहीं करते हैं कहीं और, लेकिन आपकी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लॉस हो गई कि आपने कुछ चेंजेस किए थे, वो यस, आपके पास नहीं रहेगा। इवन ओके, इट इज लाइक ना, वी आर वर्किंग एज अ टीम, तो हाँ, कई हाँ, सारे लोग एक डेवलपमेंट पे काम करते रहते हैं। तो कोई कुछ करेक्ट। चेंज कर देता है, कोई कुछ चेंज कर देता है, और वो फिर अगर वर्जन चेंज नहीं करता है, तो वो दूसरे को समझ में ही नहीं आएगा कि कुछ चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। राइट। ओके, हम जो एग्जिस्टिंग वर्जन, मान लीजिए मैंने काम किया उसी ऑब्जेक्ट पे और आपने काम किया उसी ऑब्जेक्ट पे, हम आपके वर्जन को डिलीट कर सकते हैं? दिस कैन बी सीन बिकॉज यहाँ पे परमिशंस का एक इश्यूज होगा। यहाँ पे डिलीट हाँ, करने का ऑप्शन वर्जन्स को नहीं देता है, यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन पूरे आर्टिफैक्ट को देता है। ठीक है, तो वर्जन से डिलीट नहीं हो सकते, आर्टिफैक्ट डिलीट हो सकता है। अगर मैं यहाँ से एडिट करके इसको करूंगा, हाँ, तो आर्टिफैक्ट डिलीट हो सकते हैं, लेकिन वर्जन्स डिलीट नहीं होते। जब भी होंगे तो पूरे पूरे आर्टिफैक्ट डिलीट होंगे। हम्म। तो और मैं अगर जो मान हमने लीजिए मैं, हाँ, जो हमने मेरा चेंजेस अपना किए होते वर्जन, उसको सेव हाँ, कर देता हूँ ना। हाँ सर, माय क्वेश्चन दैट देयर इज माय वर्जन आल्सो एंड योर वर्जन इज आल्सो, बट आई वांट टू हम्म। चेंज योर वर्जन आल्सो। आपके वर्जन को मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ आपके वर्जन में जाके, हम्म, कर तो सकता आप हूँ? कर सकते हैं जाके, ओके, ठीक एज है। लॉन्ग एज यू हैव परमिशंस टू दिस इंटीग्रेशन सूट ना, आप जाके कुछ भी कर सकते हैं अपने। मैंने ये आर्टिफैक्ट बनाया, आप इसमें जाके कुछ भी चेंज कर सकते हो अभी। अच्छा, और ये क्या डिप्लॉय, सर डिप्लॉय जैसे एक होता है कि सेव, और सेव एज ए ड्राफ्ट होता है, जो जो ड्राफ्ट में होता है उसको हम डिप्लॉय नहीं कर सकते आई थिंक। कर सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं नहीं, पढ़ा ऐसा था कुछ इसको। नहीं है, हम ड्राफ्ट में भी सेव हुए आर्टिफैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप अगर सेव एज वर्जन नहीं करोगे, सिर्फ सेव करोगे ना, तो वो बाय वो डिफॉल्ट ड्राफ्ट में ड्राफ्ट में जाता है। बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट में ही जाता है वो, राइट। अच्छा, राइट कर। और वो ड्राफ्ट में, जब वो ड्राफ्ट में रहेगा तो डिप्लॉय होगा? हाँ, हो जाएगा। बस वो, क्योंकि ड्राफ्ट में मोस्टली टेस्टिंग फेज में क्या होता है ना, हाँ, लाइक इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम आवर ऑन साइट एंड वी आर टेस्टिंग आउट, सो हम लोग बार बार उसको वर्जन सेव एज वर्जन नहीं करते, हम लोग उसको खाली ड्राफ्ट में ही सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं। ओके। हम्म। और इसमें दो चीज एक देखने को मिलता है सर, जैसे मैं और भी पढ़ रहा था हम्म। कि जैसे हमारे जो स्टैंडर्ड हैं, जैसे आप होम में जाके देखते हो जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हैं हमारे, राइट। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस में भी हम उसमें, आप में उसमें कहाँ पर एडिट कर सकते हैं, और कौन हमारा एडिटेबल मोड में है, कौन हमारा नॉन एडिटेबल मोड में है, हम उसी को यूज कर सकते हैं अगर कुछ हाँ, एनहांसमेंट्स करने हैं जैसे उसको लेके।
तो इसमें भी राइट। वो चीज देखना पड़ता है, और उसके अंदर भी प्री प्री एग्जिट एंड पोस्ट एग्जिट टाइप का कुछ होता है उसके अंदर। We have two things in standard objects or in standard integration. So we हाँ, have उसमें कुछ configurable. इन्हांसमेंट्स करने हैं तो शायद Yeah, पॉइंट we होने have हैं। configurable and we have second one editable. So editable या जो है उसको तो आप पूरा edit कर सकते हो, change कर सकते हो, हाँ कुछ जी, भी कर सकते हो। हाँ हाँ। जो configurables है उसमें आप कोई changes नहीं कर सकते instead of configuring that artifact। और configurations में क्या क्या part आते हैं? The हम्म, like externalized variables, connections, endpoints और आपके सिक्योरिटी मटेरियल्स जो उसमें होता है आप वही सेट कर सकते हो वहाँ पे। ओके। मैं और आपको एक प्री दिखाऊंगा एग्जिट और पोस्ट, कॉन्फ़िगरेशन वाले भी। एक प्री एग्जिट और पोस्ट एग्जिट भी होता है, 3 पॉइंट या पोस्ट पॉइंट ऐसे कुछ। प्री पॉइंट एंड पोस्ट पॉइंट लाइक फॉर व्हिच पर्सपेक्टिव यू आर आस्किंग दैट? मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड हमारा आई फ्लो है, हम्म उसमें हमें कुछ इन्हांसमेंट्स करने जो इरिटेबल मोड में है, तो उस हम्म इरिटेबल मोड में अगर हमें कुछ इन्हांसमेंट्स करने हैं, तो उस हम्म इन्हांसमेंट्स में शायद वहां पर 2 पॉइंट होते हैं, प्री एग्जिट और पोस्ट एग्जिट ऐसे करके कुछ है। प्री एग्जिट एंड पोस्ट एग्जिट तो नो नो आई हैव नॉट सीन दिस थिंग्स। को थोड़ा एक्सप्लेन करो उसमें क्या कुछ पढ़ा है आपने कुछ वहाँ पे? वी हैव इनबाउंड एंड आउटबाउंड टू सिनेरियोस। हाँ, प्री एग्जिट एंड पोस्ट एग्जिट, no, it can be terms of saving the integrations. I'm not getting that. ओके, आई विल चेक एंड देन आई विल टेल You यू। just let me know या क्या या आपका कंसर्न है उसमें ना। So moving further, I think content modifiers are okay. We are taking up conversions and using the content कंटेंट modifiers only। मॉडिफायर में बस इतना ही है या उससे कुछ और आगे भी है कंटेंट मॉडिफायर में? जैसे मैंने आपको बताया इसमें हम लोग ये HTML और CSS भी लिख सकते हैं, तो उसका भी कोई मैंने पार्ट अभी दिखाया नहीं आपको HTML CSS का। सो HTML CSS का एक बेसिक सा फंक्शनल मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, आई एम नहीं, मैं राइटिंग इसलिए डाउन। पूछ रहा हूँ सर कि कंटेंट मॉडिफायर में और क्या-क्या चीज़ आता है? मतलब एक पूरा नहीं, यही है क्या चीज़ मोस्टली क्या-क्या सारे कंटेंट सिनेरियोज होते यही हैं? है, मोस्टली सब सिनेरियोज यही है। हुँ, हुँ। अब एज लाइक आपको अभी कोई फॉर्म क्रिएट करना है and that form is defined in CSS HTML language, so how can you use that? So वो एक पॉइंट है, वो आपको मैं दिखाऊंगा जब हम लोग मेल करेंगे यहाँ से, ठीक है? जब हम लोग कोई मेल अडेप्टर यूज करेंगे देन एट दैट टाइम, बिकॉज दैट इज समथिंग कमिंग इन सम मिडिल लर्निंग, सो द बेसिक थिंग्स आर क्लियर। मोस्टली यही है, इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं होती है। एक चीज़ और मेरा क्वेश्चन था, मान लीजिए जैसे मैसेज हेडर में तो हम वो चीज़ रखते हैं जो हमको आगे आईफ्लो के बाहर भेजना है, मान लीजिए जो भी चीज़ हम चाहते हैं देना रिक्वेस्टर जो भेजना चाहता है, रिसीवर को कुछ चीज़ देना चाहते हैं। और राइट मैसेज बॉडी के अंदर में प्रॉपर्टी में हम वो रखते हैं जो हमें जो हमारे यहीं तक रहेगा, ठीक है? तो राइट। मैसेज बॉडी में भी जो चीज़ रहता है उसे हम आगे भेज सकते हैं, या प्रॉपर्टी और बॉडी आई थिंक समटाइम्स सेम है, क्योंकि बॉडी में तो पेलोड हो जाता है हमारा। अब प्रॉपर्टी में जो हमारा होता है, जो हमारे विदिन द इंटरफ्लो आई फ्लो होता है। प्रॉपर्टी एंड बॉडी में देयर इज ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि प्रॉपर्टीज का एक लिमिटेड वर्जन है जहाँ पे हम लोग बड़े पेलोड्स को नहीं डाल सकते हैं, राइट? ओके। एंड अब प्रॉपर्टीज, अब मेरा प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें एक पीओ है, एक पीओ के हमें 10 लाइन आइटम निकालने हैं, उसको मैसेज में डाल के हमें उसको ये देना है पेलोड में, तो उसको कैसे लिखते हैं फिर? मान लीजिए हम एक ही कंटेंट मॉडिफायर लेंगे और हमें इसको एंड पॉइंट बना के देना है कि हमारा ये है, आप ये परचेज ऑर्डर दोगे और हमको ये 10 लाइन आइटम उसमें भेजना है, ऐसे क्रिएट करके दूसरे को देना। So you are saying the 10 purchase orders are coming in a row or in a payload? इन अ पेलोड विद इन तो वहाँ पे देखो पीओ कंटेंट मॉडिफायर में जब भी कोई बॉडी आएगी, इवन आई कैन शो इट यू राइट नाउ, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी हो सकता है। सो मैसेज बॉडी में जब कोई पेलोड आएगा ना तो उसकी एक डेफिनेशन होगी, या तो वो XML होगा, मोस्टली XML ही होगा हाँ, क्योंकि यस, यहाँ पे करेक्ट जेसन करेक्ट। एक्सेप्ट नहीं करेगा, XML होगा। हाँ हाँ, ये तो क्योंकि इन जनरल टर्म हाँ, में हम लिख रहे हैं ना कि इन तो बॉडी में कैसे हाँ, देखते हैं, तो क्या करते हैं। उसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग स्प्लिटर्स यूज कर सकते हैं आगे। यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर में उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इवन नॉट इवन इन प्रॉपर्टीज, नॉट इन मैसेज बॉडी। उसको ओके स्प्लिट करने के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास दूसरे फंक्शंस है, फिल्टर्स है, स्प्लिटर्स है, उनको यूज करेंगे। ठीक उनको है। यूज करके उसको स्प्लिट करके पास ऑन करेंगे। ओके कंटेंट मॉडिफायर में अगर मेरे पास एक एक PO आता है तो मैं उसको बॉडी में या फिर प्रॉपर्टीज में भी स्टोर कर सकता हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं एक पीओ आया तो उसको PO1, दूसरा पीओ आया तो PO2 ऐसे बना सकता हूँ, नहीं, दैट विल बी यूजलेस। एक ही वेरिएबल बनाएंगे, बार बार उसको रीड करेंगे, सेंड करेंगे, एक लूप लगा लेंगे। एक लूप कैसे लगता है वो आपको स्प्लिटर्स और फिल्टर्स के थ्रू एक लूप कैसे लगता है वो बताऊंगा अभी, कैसे एक लूप लगा सकते हो बीच में। ठीक है। ठीक है, तो मतलब मैं कंटेंट मॉडिफायर में हमारा मेन थिंग यही है, हेडर, बॉडी और आपका प्रॉपर्टी, राइट राइट। अब बॉडी में राइट हम एक्सएमएल का जो फॉर्मेट होता है उसके थ्रू हम पास कर सकते हैं, उसके थ्रू भी पेलोड दे सकते हैं। राइट। ठीक है। सो कन्वर्जन्स, आई एम टेकिंग आउट फ्यू कन्वर्जन पॉइंट्स, एंड आपका ये जो पॉइंट है ना अभी कुछ POI और हम लोग उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो इफ आई एम going for converters, we have three inline base, like we have XML, CSV, or we have JSON. So फराज we will सर, follow. मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता, जो मैंने अपना आईफ्लो बना रहा था, ये तो आप टाइमर के साथ हमें दिखाए, Hmm. अगर आप इसको हमें HTTPS अडेप्टर के साथ एक दिखा दे तो मेरा जो कंटेंट मॉडिफायर का वो भी क्लियर हो जाता। जस्ट हमने भी कोर्स डिजाइन किया था तो मैं वो आपको पॉइंट अच्छा कोई नहीं, दिखाऊंगा ठीक है, अभी यार ना, ठीक है। वो पॉइंट ओके आपको ओके, ठीक, दिखाऊंगा, वी विल नॉट मिस दैट, क्योंकि मैंने अभी ओके जैसे ठीक है। मेल अडेप्टर्स का और उसका पॉइंट भी मेरे पास कंटेंट मॉडिफायर के यूज केसेस है, वो एक तरह से यूज केस है। तो हाँ आप ठीक। उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी पॉइंट, वो हाँ यूज हाँ केस भी मैं आपका क्लियर करूंगा, नो वरी, नो डाउट ऑन ठीक, दैट। ओके। ठीक। ओके ओके ठीक है। So just now focus on converters, like how we can use conversions, right? यस। If I'm getting a payload in XML, so I just need to convert that payload from XML to JSON. I'm using XML to JSON converter over here, right? XML to JSON converter. I'm passing out the XML payload over here. What XML payload can be? Creating an XML payload. एक XML बना लेते हैं ना इसमें छोटा सा। XML payload मैंने बनाए थे कुछ, नो नो नो, payload no. Okay, I think मैंने बनाया तो उसको एक बार ओपन करना पड़ेगा। नहीं तो कोई पुराना भी आपके पास पहले से बना हुआ उसको ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। वही वही, डेटा पेलोड, बनाया हुआ एक। हाँ सो ठीक है। एक हम लोग रूट रिकॉर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है रखा, root record and reach. Okay, this is not the correct one. Oh, just let's make a new one. So I'm using XML. ब्यूटीफायर पेलोड। अगर गूगल नहीं होता तो हम लोग काम कर पाते क्या सर? कर पाते हैं, थोड़ा बस टाइम लगता है। मैं इसको यहाँ पे भी बना सकता हूँ, नहीं लेकिन थोड़ा नहीं, बस मुझे बैठ के वो मैं पूरा लिखना पड़ेगा तो नहीं नहीं, मैं उससे इस बचने के संदर्भ में लिए नहीं ना। बोला। इवन व्हेन आई एम वर्किंग ऑन माय कोड, देन आई एम हम्म, थिंकिंग कि कितना कोड तो हम लोग वहीं से उठा लेते हैं, बस अप्लाई करना जानते हैं, right. होना चाहिए। I'm using this one, right? And last mode. इसको एक रिक्वायरमेंट देते हैं ना, clear out XML for inventory items. Okay. और
I'm adding one context. Create an XML with countries playing in a game and winning the medals based on different categories: gold, silver, and bronze. ये नहीं करेगा तो चैट जीपीटी करेगा, फिर ये करेगा ही नहीं शायद जॉर्ज को। तो परप्लेक्सिटी यूज करते हैं। परप्लेक्सिटी यूज किया है आपने? एनीवन? नहीं, अभी तक तो नहीं। ये चैट जीपीटी से भी अच्छा है। ये किसका प्रोडक्ट है सर? एआई। नहीं एआई किस कंपनी का, जैसे चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का है या समथिंग इसका है, किसका है ये? They're using multiple things. They have like a deep search. ना, they have deep search and other things. मैं आपको दिखाऊंगा अभी। So आ गया तुरंत ये तो। कंट्री चाइना, कंट्री जापान, तो ये बहुत सारे दे दिए इसने। हम थोड़े से लेंगे। गेम रिजल्ट्स। ओके, कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। मेडल टैली, गेम रिजल्ट्स, गेम नेम, ईयर, लोकेशन, मेडल टैली, ये right. It is going much deeper. Root, parent and child. Removing this up. गेम रिजल्ट्स, मेडल टैली। मेडल टैली के अंदर पूरे मेडल्स हैं अलग अलग कंट्रीज के नेम पे, लेकिन कंट्री और कंट्री फिर से एक और लूप आ गया उसके अंदर। ओके, let's remove this medal tally also. Now game results and country, root and child, and we have other thing, gold, silver, bronze medal definitions over there. Using this payload, putting this up in our message body in constant. Now it will be gone through XML to JSON converter. Then how this XML to JSON converter will work upon this? It will read up the root definition, what root we have defined over there. Then it will create the JSON format based on some requirements. What all those requirements will be, like what is the prefix we need to set up. If we are setting the prefix as colon, then the colon will be there in between. And if I'm setting the prefix as comma or pipeline or semicolon, then semicolon will be over there. By default, colons are mostly used as a prefix between JSON's contents. JSON output encoding is from header or property. If we are setting it out in any other format, then it will be gone through that. Like if I'm setting UTF-8, then it will be done in UTF-8. Mostly it is done in header property or UTF-8. If I'm suppressing the JSON root element, like I'm just removing the root element, like the root element is game results. If I want to remove that, then I can click on suppress. Then root element will be removed from there. Streaming is used for looping up. We are not using that up. So just we have added this out. If we have any other conditions like setting up
XML namespace or JSON prefix name, then it can be given over here. Right now we are not giving that. Just see the results, how it is flowing from. So it's very simpler to use. Like we have just put up one XML to JSON converter, not given any conditions right now. If any conditions needs to be given, then we will see it how they are working up. So let's see the results then after conversion. Deploying this up. Deployed. So up till here, we will get the response payload. So you can see on XML to JSON converter, I can see my payload will be there. So what is my payload? This XML version, game results with year, location, and all these things. It is coming over here. So if I would like to see the results of my JSON converter, it is coming on the end, right? So if it is converted to JSON, you can see the results are coming. Game results. I just formatting this out clearly. JSON formatter. We have beautifiers directly available in different codes. Like if I'm using PIPO, then beautifiers is there. So if the payload is coming over here, I can just click on one beautifier button and this payload will be beautified. So we don't have that option in CPI. It can be, you can say it's a drawback, but it's not. Because if beautifier, if they have allowed the beautifier over here, they're calling out the third party application to beautify this. Calling the third party application will reveal out the payload. We are not revealing out the payload to any other party, right? So you can see with the countries, different countries, it is set up like you can see the JSON payload is created. I think it's very simpler. So इसमें कोई क्वेश्चन कोई डाउट कुछ है तो आप बताइए. No, sir, it's clear. कभी भी अगर कोई कन्वर्जन ऐसा आए आपको यूज करना है XML टू JSON तो यू विल यूज दिस. अगर कोई कंडीशन देता है उसमें लाइक दे आर गिविंग सम स्पेसिफिक कंडीशंस कि आपको हेडर रिमूव करना है, आपको XML नेम स्पेस सेट करना है, JSON नेम प्रीफिक्स सेट करना है, तो आपको XML नेम स्पेस डिफाइन करना होगा. आपको कौन सा XML नेम स्पेस ले रहे हैं आप. जैसे यहाँ पे मैं गेम रिजल्ट्स का ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग गेम रिजल्ट्स एंड आई एम गिविंग JSON प्रीफिक्स फॉर गेम रिजल्ट्स एज गेम्स और कुछ चेंज कर रहा हूँ उसमें गेम्स क्यू. So what results will come over there then? Let us see that also. Oh, they have removed it out. I don't know why. Game results queue is not coming. They have removed it up. Maybe because of this. Okay, use namespace. So we are giving one by default namespace and they're utilizing that only. So the conditions are not going. It's coming over here, game results and games queue. But not taking out game results. Game queue. Right.
Checking in game results only. Okay, I will see that how we can use the namespace mappings and all. So now we have two more conversions in line. There we have XML to JSON or XML to EDI or CSV. CSV is also very simple. We can just use it and make it up like this only. Then we can pass on JSON. Like we can use this JSON format, or you can use any other JSON data format from your side. Can pass on the data. In content modifier, you can create your own artifacts. You can use content modifiers, pass on the JSON data and convert that to XML. I will see these two results from your side. It is just your homework, note it down. I will see these two results from your side. You are passing up from JSON to XML and from XML to CSV on that. And even from CSV to XML also, we can see this later on. But I'm just crossing up because I think we don't have much things to discuss or discover over on these conversions. And if any doubt, any questions you guys are facing up, maybe there are few common interactions or few points are coming like we have seen in namespace mapping. So I will take this up in our next session. I will take these things up, or you can collect or note down your points or your doubts. You can prepare a few questions using the conversions or converters. Regarding these points, we will discuss over there, right? So I'm jumping on to next topic. We can use filters also. If we have some requirements for filter, like filter is very common part, and it's not widely used over here because this is tool which can be removed, I think, in coming days, because it's a tool which can be fulfilled through Groovy, through routers, or through other uh, uh, logics as well, right? So we have one thing, we can pass one XPath expression node over here, and we can give a value type on node list, on node, or integer or boolean, or even on string types also. We can filter out our data. So how we can filter out our data over here? So if I'm removing like what I'm doing, You just save it in another version, sir. It will be there. it will be there. I will do that. Okay, I'm saving it as another version. Yeah. But your last version is saved up to 1.1 only. So yeah, 1.0.2 filters, filter, palette, add on. Okay. Up to 1.0.1 you have all those things, but up till here you have the filter version added. So why it is showing as like we have not defined that XPath. You can see XPath will be in red only. It is in red. So just moving up this CSV to XML conversion on the next point and using filter before that. Deleting this node, deleting this node as well, connecting this node to here, and then giving XML to JSON conversion on the second path. It's not taking. It has taken. Okay, it can take like this also if if instead of deleting the path, deleting the both of the paths, setting it between, so we can just hover on the line, and then line can take it by default from here to here, right? So here in filter, what we can do, we have XML path over here. If I want to filter out my data based on my path, like I want to filter out my data based on this country or other game results, like, so we can pass on this as like in XPath. We have XPath over here. We can pass on this XPath as like // or I can give the relative path as well. Like instead of giving absolute path, sorry, relative path, I'm giving the absolute path over here. So what is the difference between absolute and relative? Let me mark it over here. What is the difference between absolute and relative? So
Yeah, this is the one. And it will be used in many cases, absolute and relative. You guys have any hints, any any point for these? Yeah, absolute path means there is a whole path we have to go root, then child, then go with the what you want. And the Yeah, relative part, yeah, root part, relative part is the direct that node you what you want. Yeah. keeping In the is keeping the roots, Yeah, yeah, and we are giving the values directly where we just need to have that. We are giving the yeah. values, so we are giving the path So, starting from a mid node. so what is advisable, sir? Always use absolute or relative. Mostly because in that case where we have some doubts, like it can bring up data redundancy, it can bring up some duplicate records. In that case we have to use absolute path. But if we have one common field and we have our single payload only, where like the data redundancy or duplicate records will not come, in that case we can use relative path. Mostly we prefer to use the relative path only because it is smaller No, but this payload is very and simple. brings Simple XML uh, is there, sir. It is not nested brings XML, I think. brings the payload in fast way. Yeah. But what can lead, it can lead to some problems if the payload is containing multiple duplicate values. In that case what it can do, it can give you some wrong information, so that Yes, in that correct, case we correct. have to use absolute path. Okay, so here I'm giving the relative path only, there's no worry for that. The payload which we have defined, game results, and it is not a big uh, payload also, and country. So based on this I'm If, filtering out the data. sir, if you write directly country, then I'm sorry, if you write directly directly country, huh? country, Directly country will also work on that case, yeah, that is this check. right? So value type will be node in this case. So what Node is or node list, node node list and node. So node, yeah, node. Boolean type will be given if we are containing two different cases. That is in case of true or false, or yes or no. So if there is a case over there, in that case we can't use the XPath. We have to use some other formats, like we will be using a condition. A condition can be used in another formats, like giving NS or other values. So it will be yes or no, like I'm giving country equal yes, like this, or something different will be there. So yes or no will be used in Boolean cases. And if I'm just need to filter out the data on node list, how many records I'm getting from the previous path or previous node, I'm just filtering out there those nodes. I'm reading out those 10 records, and out of that node list, I'm filtering it out based on the country, right? And then we have node. Oh, the node will be taking out the values based on all the things which is coming from the previous path. So reading out this specific value or path, like I'm giving country equal USA. So now the USA value will go front. here is country name. It will work for the country only? It think it will go for country name. Let me check it out. It will check it out. I think it can be a case, because इसमें वो फिर Okay. error throw करेगा. चलो. यहाँ पे क्या करते हैं ना इसको, कंट्री एक नोट बना लीजिए सर, नेम को इधर बंद कर दीजिए, इसे जैसे गोल्ड लिखा हुआ है इसको बंद कर दें ये इधर हमको कंट्री को. सारे उसमें चेंज करना पड़ेगा फिर. नहीं तो इसी पे देखो ना सर, कंट्री ले रहा है कि नहीं ले रहा, आप देख करके देखो एक बार. हाँ, इधर भी बंद करना पड़ेगा.
It will be like this then, and for all the countries. ठीक है, हम लोग दूसरे केस पे फिल्टर आउट करते हैं, इस पे ऐसे नहीं, उसको सेम रहने दीजिए। सर अगर आप फिर इस पे ले सकते हो, गोल्ड पे ले सकते हो। गोल्ड पे लेंगे, जिसको हाँ गोल्ड मिला है हाँ मोर देन 2 2 2 2 3 4 4 5 5, ठीक है, जिसको 5 से ज्यादा गोल्ड मिले हैं हम लोगों को उनका डेटा चाहिए आगे। ठीक है, अल्ताफ 1 मिनट देना होगा, इज ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाय गाइस, actually I got a call, just need to move out. जस्ट हम लोग जल्दी जल्दी इस पे हम लोग मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हेलो। हाँ जी आ रही है। या सो हम लोग क्या लेते हैं, कंट्री एंड गोल्ड पे, एंड इट शुड बी मोर देन इक्वल टू और मोर देन 5 ही ले लेते हैं बस, राइट। अब लिस्ट में वो चेक करेगा जिसके पास गोल्ड 5 से ज्यादा है उनका डाटा आगे पुश कर देगा, देन फिर आगे ये कन्वर्ट कर देगा उसका डाटा कन्वर्जन जो हमने लगाया। So, अब ये वर्क करेगा मोस्टली, या आई होप सो इट विल वर्क। कैन यू सेव गिव हियर करते हैं। मल्टीपल कंडीशन सर? Multiple conditions will not be possible in this filter case. That's why this filter is going out of league right now, because we can't give multiple conditions. And if we want to give multiple conditions, then we have to use either Groovy, either other formats we have. Like for Groovy we can filter it out in a number of cases, and mostly we have some logics to be used in router as well. So on routers we can pass on multiple conditions, right? So that's It why means filters router are is not work same as uh, filter. filters are not mostly used. You can see in real-time scenarios in the real-time projects, we're not focusing on filters a lot, right? But I'm showing you for learning purpose to use the basic things. I'm showing you that. Just putting this in trace mode. Something has happened over here. Cannot be cast.
bundle class loader java until array list. Okay, हमने एक वैल्यू पास किया नोड लिस्ट विद वैल्यू ट्रू ड्यू टू जावा लैंग बुलियन. अच्छा 5 दिया, इसको कहीं सिंगल कोट में तो नहीं डालना पड़ेगा? text text and okay केवल गोल्ड पे सर फिल्टर करो ले रहा है क्या? gold केवल equal गोल्ड, हाँ केवल गोल्ड पे फिल्टर करते हैं अभी. gold equal 10. Not taking that up. Invalid entry. Single quote, sir. Single quote. Can you give it in Yeah, single maybe. Or if not working, then we will tally the exact definition for the filter out. Still, it is not working. Showing as error. But let me see how it is showing. It's showing as error only. No worry. We just need to tally then the filter cases. We can go up. Okay. Yeah. It will, like, if you want to see something regarding the CPI palette, then I will recommend you to use CPI cloud integration tools available on cloud platform from CPI help guidelines. Just go up there. Even what we are studying right now over here, you can see all the things over there. Okay, so what they are showing up using the palette and giving the name, XPath expression, we have given that. Output filter is a collection of nodes. Output filter is type of node. So it is just very basic things. They just write a line and rest everything depends on us to understand what they are saying. There is no example, is there? There is no example. Rest everything on us only. How to understand this out. Output In context, of use filter is context and type of procedure, no? integer or stringer. So I think the integer we have to use integer over there. Integer. Okay. Equal to 10. Let me save it out. No, it's not working again. Is type of integer. You just remove certain. You just use country and gold. Is it filtering it or not? It will filter out, but it will give all the records. The country which yeah. On the base of node list, it will give all the results based on gold and all. Still it is showing error only. Still it is showing error only. In double slash or single slash is I think it is valid or so what? No, that is different case. Even explanation is not given in this note also. I just need to take out some examples. Okay, few more examples are here. XPath is, देखो यहाँ पे तो direct value पास किया हमने, direct value भी पास किया था उसको. Not taking out. स्टार कैटलॉग डिस्टेंस इक्वल मैक्स स्टार कार डिस्टेंस, ये तो समझ के पर है. स्टार कैटलॉग स्टार क्लास ये देखो ओके आप, ओके हमने गॉट इट गॉट इट. हमने डबल स्लैश लगाया या सिंगल हाँ, स्लैश है? सिंगल स्लैश है एंड इवन वी हैव यूज्ड द बैड थिंग. तो हम लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू में GE लगाना होगा एंड देन सिंगल
or 5, it Yeah. will be like this. Saving it out. Okay. No, sir, you Yeah. have to remove single load also. That's mm, Property class. It's good. Simple function. They have used some function and classes. I have not used this in many cases, like in lot of integrations we have worked on, but not used this anywhere. So it's a case of just learning out value type node list only. And what is the value type in second one? Value type node, max distance. Node list and node value type node list, and we have this only. Okay. So if I'm setting out value type node list less than equal to, okay, just that only we have did now. GE. You Let me remove double slash, sir. You remove single. You have to do single slash, I think. the relative path we have given. So relative path, yeah, they have given some absolute path over there. Okay. Because we can give a relative path as well. You can see message and orders. Is it deployed? It's again failing only. Greater than equal to 5. Something is there. Class. Okay. Is it there? Class. Okay. Less than equal to functions, column Ta- sample. So Like how they have made it out? Uh, Country. Up till country it is fine. Then they made it big big columns, and then Egypt. Then we use small brackets gold greater than equal to 5, small brackets gold function simple property class in close and close and close. This is also close. Okay. Country gold greater than equal to 5. Hope it's working fine. No, showing is still as an error. Okay. Okay. Using this as and small brackets. Just let me see if it's working. No. Country. Okay. Name. Country name is given over there. No? The country is not coming. I think country is not catched up in that. So let us do one thing. हम लोग payload को थोड़ा change करते हैं. Country name and USA. So making that same payload. Country name USA. Removing name from here. Closing up country. Giving the name below. China. China. And taking out data for these two only.
putting it up here. Yeah, it may be a case वो country को catch ही नहीं कर रहा है. Country game results, country name, gold more than 5 or gold equal to 10. We can write it down, gold equal to 10 also. Filter, processing. So just to try it out, I'm giving game results, country, gold equal to 10. We have saved a lot ना, इसने save नहीं किया इसको. Gold EQ 10. Yeah, it's our bad. हम लोग उसको पेलोड ही गलत पास कर रहे थे, वो चेक ही नहीं कर रहे. Let me put it in trace mode again. दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं. Deploy. Yeah, you can see हमारे पास कितने सारे डाटा थे. अब नेक्स्ट साइड पे केवल एक ही डाटा पास ऑन हुआ, and that is country name US and golds are 10 in that. Amit, Karan, you are there? Yes. Yeah. Yeah. So many of the times we face some issues like ये एक अच्छी learning थी मेरे लिए भी, like But it मैंने is, but it, content sir, किया नहीं. it is. I think we are taking absolute path. It is not the relative path. हाँ, if you want me to take the relative path also, just I will take the relative path now. I'm deploying it again. वो हमारा पेलोड ही गलत हम लोगों ने ऐसे सेट किया हुआ था, फिर हम लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं उसको. वो कैच कर रहा है उसको, लेकिन कैच ही नहीं हो रहा था उसको वो. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने रिलेटिव पाथ यूज किया, रिलेटिव पाथ पे भी चला अच्छे से. लेट मी शो यू द रिजल्ट्स. तो आपको दूसरा होमवर्क ये है, आपको यहाँ पे दूसरे फिल्टर्स अप्लाई करने, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. हमने भी इक्वल टू का अप्लाई किया, देखो रिजल्ट सेम आया. ठीक है. Now there are two homeworks for you guys to use the converters and use the filter with different conditions. Got it? I think we have covered 3-4 topics today. Just I would like to take up these topics will be big enough and adapters will be big enough then. So एक just touch करता हूँ, just because you can practice also. In if you guys practicing it up in the weekdays, na, just ping me over WhatsApp. We can have some connect or see some things. So if let's take that one only, which Amit has deployed earlier. So I'm using this one. Amit, you have deployed it already? No, sir, I'm not मैं deploying. deploy किया हुआ, ठीक है. तो इसको मैं deploy करता हूँ, ठीक है. Error है अभी तो सर इसमें. चेक करेंगे क्या एरर है. मैंने इसको डिप्लॉय किया, इट्स गेटिंग डिप्लॉयड. ओके, हो गया. अब मैं ओवरव्यू पे आता हूँ. मैंने देखा कि मेरे 2 आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं. एक मेरा जो हम लोग जिस पे प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड सेकंड वन विच अमित हैज क्रिएटेड. सो आप यहाँ पे देखोगे तो इसका एक एंड पॉइंट क्रिएट होगा.
अभी वो एंड पॉइंट इसको दिख नहीं रहा है, अभी एक एंड पॉइंट क्रिएट होगा इसका, बिकॉज ही हैज यूज्ड HTTPS एज अ send or proxy HTTPS यूजर रोल। तो यूजर रोल क्यों दिया इसको? क्योंकि बिना इसी जो रोल के तो ये करने ही नहीं देगा सर ना। अच्छा, बाय डिफॉल्ट दिया, ठीक है। हाँ, ये तो बाय डिफॉल्ट, अगर यहाँ CRSF में पे प्रोटेक्ट कर देंगे तो फिर वो मांगेगा, ऑथेंटिकेशन मांगेगा। एक इसका एंड पॉइंट क्रिएट होगा यहाँ पे, रुको अभी, ये हो गया देखिए। तो ये हाँ, एंड पॉइंट आपका आर्टिफैक्ट का एंड पॉइंट क्रिएट हुआ, ठीक है। कैसे आपने डिफाइन किया, यहाँ पे देखिए HTTP आपने ऑपरेशन यूज किया, आपने इसको एड्रेस दिया Sapmate B42, देन दैट एड्रेस इज कमिंग विद HTTP ऑपरेशन Sapmate B42। और इसके पहले का एड्रेस क्या है, मैंने आपको बताया था कि इट विल, ये पूरा CPI ट्रायल अकाउंट का जो URL होता है, जिसमें आपके पास ट्रायल अकाउंट नंबर और उसका ट्रायल अकाउंट वर्जन जो भी, उसके फिर उसका फिर डेटा सेंटर एड्रेस और उसके हाना ऑन डिमांड जो उसका फेज है, वो सब ये यहाँ पे कॉमनली रहता है। इसी से ऊपर से आपका ये वाला इंटीग्रेशन टू ट्रायल CPF, ये यहाँ से यहाँ तक, राइट। और फिर दूसरा आपका उसके आगे आपके जो आर्टिफैक्ट्स के आपके URL आप डिफाइन करते हो वो ऐड कर देता है। तो अब आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपका एंड पॉइंट जनरेट हो गया। आप इस एंड पॉइंट को यूज कर सकते हो कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। इवन यू कैन सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पोस्टमैन, यू कैन सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी अदर थर्ड पार्टी, आप किसी और को भी दे सकते हो। इसके लिए आपको कैसे होगा, कैसे सेंड करेंगे, यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स यूज होंगे, फिर वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा, क्योंकि खाली पाथ देने से तो डाटा नहीं आएगा ना। वो यस यस पाथ तो करेक्ट। दे दिया, अब वो पाथ हाँ, तुमसे फिर पूछेगा कि भाई अब उसको ऑथेंटिकेट कैसे करूं मैं इसको रिक्वेस्ट को। तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वी हैव वन मोर थिंग विच आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन, कि उसको ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग। वी हैव टू थिंग्स ओवर हियर, यूजर नेम क्रेडेंशियल्स, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स जो हम लोग सेट करते हैं, सर्टिफिकेट बेस्ड। सो क्लाइंट क्रेडेंशियल्स हम लोग यूज करेंगे इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। जस्ट दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग, मैं पोस्टमैन को भी कवर अप करने का वो ट्राई करूंगा अभी, क्योंकि जिससे कि आपकी ये अडेप्टर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएंगी। इवन वी हैव इनलाइन फॉर अडेप्टर्स इन नेक्स्ट सेशंस ओनली, एंड वी विल मार्क फॉर पोस्टमैन एंड थर्ड पार्टी कनेक्शंस एज वेल। ओके, सो आई थिंक अब आपको ये जो कन्वर्जन्स और इस पे कंटेंट मॉडिफायर में आप कुछ ट्राई कर सकते हो, अलग अलग अपने साइड से प्रॉपर्टीज एंड हेडर्स को पास करिए एंड फ्लो करिए। इवन आई थिंक एक दो दिन में आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पिंग कीजिए, आपको अगर कुछ नया होमवर्क चाहिए तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए नए आर्टिफैक्ट्स और रेडी करता हूँ, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइज। ओके। Can we see Karan's the homework, how he faced all the data? Yeah, I I can will show you. recommend कि आप दोनों आपस में कनेक्ट करें, और Karan just like you have some like knowledge on the CPI and artifact, just थोड़ा अमित को हेल्प करो, जिससे कि नेक्स्ट सेशंस में हम लोग अगर कवर अप, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ तो आपका तो अभी वैसा चल रहा है कि आप बस बैठ के देख रहे हो, सुन रहे हो अमित, बिकॉज अमित इज लर्निंग द बेसिक थिंग्स। सो आप उसको हेल्प करो, बिकॉज इट विल बी लर्निंग पार्ट फॉर यू एज वेल। Yeah. And Amit also can get something. All right. Yeah, right. Okay, guys. Then I think just we can drop ये out. फरहान सर, ये बताओ मेरे को, ये जो सक्सेस फैक्टर के साथ हमारा इंटीग्रेट, चूंकि ये जो आपने आपने जो होमवर्क दिया था सॉरी करण को, तो ये तो हमारा सक्सेस फैक्टर के साथ इंटीग्रेशंस का था ना, उसके उससे हमारे डेटा निकालना था, जी तो उस पे कैसे करना है हमें? हाँ, उस पे देखो, अभी अडेप्टर्स पे हम लोग नहीं आए हैं, तो आपका बेसिक काफी चीज ये है, तो बेसिक थोड़ा सा, हाँ हाँ, जैसे आपने ठीक। HTTP यूज किया, HTTP पे हाँ अडेप्टर है, तो हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते हैं सक्सेस फैक्टर के साथ। जैसे अभी HTTP का URL जनरेट किया आपने, लेकिन वहाँ थोड़ा सी एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे सक्सेस फैक्टर एंड पॉइंट दोगे, उसके साथ हाँ, वहाँ पे क्रेडेंशियल्स दोगे। क्रेडेंशियल आपको ऑलरेडी सक्सेस फैक्टर के शेयर किए हुए हैं हमने, हम्म, वो क्रेडेंशियल दोगे। फिर कनेक्शन सेट करने के बाद वहाँ पे एंटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आई थिंक जब आप देखोगे, करण आपको दिखाएगा अभी, तो वहाँ पे क्रेडेंशियल सेट करने के बाद एंटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप एंटिटी सेलेक्ट करते हो, देन यू वेंट टू सेलेक्ट द फील्ड्स। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, अभी रिसेंटली, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, सक्सेस हाँ वही फैक्टर पे मैंने मैं देखा। आपको एंटिटी और सारे इंफॉर्मेशन के बेसिक इंफॉर्मेशन जो सक्सेस फैक्टर में हम लोग देखते हैं वो मैंने आपको बताई थी।
दैट्स वाई अगर हम लोग एक लेक्चर को क्रॉस करें ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज होता है, ये होता है। जैसे अभी कंटेंट मॉडिफायर ये और कन्वर्जन्स और ये फिल्टर्स हम लोगों ने आज पढ़े, इनकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में, इवन आफ्टर कवरिंग अप ऑल द पॉइंट्स वी विल सी द रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशंस आल्सो। इट्स वेरी यूजफुल। इफ आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने सक्सेस फैक्टर कवर अप कर लिया, तो उसके बेस पे अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या हो रहा है वो, है ना। करण प्लीज उसको दिखाना एक बार कैसे का आपने कनेक्शन वगैरह बनाया है। हाँ हाँ और अगर कुछ पॉइंट्स, अगर कोई डाउट्स है आप दोनों को या फिर आपको अमित, तो डायरेक्टली यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। पिंग करो एंड डेफिनेटली वी विल टेक आउट सम टाइम टू सिट टुगेदर ऑन दैट। So for ओके us, गाइस, next class we will take it at the same time or what? जस्ट फॉर नेक्स्ट वीक आल्सो आई विल नॉट बी अवेलेबल इन द इवनिंग, सो Okay. यही आफ्टरनून में ही बेस्ट रहेगा। So Saturday and Sunday, both of the days we will take up on the afternoon. या तो और 2 लेट मी PM नो आप इफ लोग यू को गाइस। चलेगा क्या, मतलब इंडियन Sorry, टाइम 2 PM इंडियन sorry. टाइम? 2 p.m. afternoon, no? हाँ यस, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग करण, आपको सुबह सुबह जगा देते हैं इतने सवेरे सवेरे। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू। बट एंड फरहाद रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। ओके ओके, हाँ मैं भूल गया, वरना मैं तुरंत बंद कर देता हूँ हमेशा। हाँ।